பகவத்கீதா 4ஆம் அத்தியாயம். ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिश्वाहवे ब्रवीत्. एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु शकाले मेघमगधा योगो नष्टपरन्दपा. श एवायं मया तेऽस्त्य योग प्रोक्तपुरातन भक्तोऽसि मे शगा सेदीरहस्यं खेदतुत्मम्. अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वद कथमेतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव सार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. जन्म कर्म समे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागता. ये यदा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. साधुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागस तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा. इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्.
किं कर्म किमकर्मेदि कवयो यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वमोष्यसे सुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं सविकर्मणा अकर्मणः स बोद्धव्यं गहना कर्मणो कदी कर्मण्यकर्मय पच्येद कर्मणि सा कर्मय सा बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत् न कर्मकृत् यस्य सर्वेषामारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्नितः कर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तो विनैव किञ्चित् करोति निराशीर्यदसितात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्रुच्चालभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समचित्तावसितौ सकृत्वापि न निबध्यते कदसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितते सदा यज्ञाय शरदः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुष्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाक्षिणुः जुष्वति सप्तादीन् विषयानन्य इन्द्रियाक्षिणा जुष्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि सापरे आत्महं यमहोहन्नौ जुष्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याया ज्ञानयज्ञास्त यदया संशितौ व्रता अपरे नियताहारा प्राणेषु जुष्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशब्दकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मस्नाननं नायं लोकोऽस्त्यज्ञस्य कुतोऽन्यपुरुषोत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्विति दान् सर्वाणेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञान्यायज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्वित्ति प्रणिपातेन परिव्रजेन सेवया
उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण त्रस्यस्यात्मन्यदो मयि अभिषेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्दरिष्यसि यदैतांसि शमितो निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् तथा न हि ज्ञानेन तृषं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्य कर्माणं ज्ञानसंचिन्न संशयम् आत्मबन्धं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानहीनात्मनः सिद्धिद्वैनं संशयं योगमादिष्टोत्तिष्ठ भारत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद् ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।